Today we will take SST of Standard 3rd in online classes. Now see Chapter 1, our fascinating universe, हमारा अद्भुत ब्रह्मांड. Actually, in universe there are so many things. First of all, we will read the lesson 1. When we look up from the earth, we see the sky. Look at the sky during the day and at night. What you observe? हम लोग आसमान को दिन में देखते हैं और रात में देखते हैं. हम लोग क्या फील करते हैं? There are two scenes in which one scene is of daytime, another one scene is of night time. Okay. During daytime, the sky looks blue with clouds. In the night, we see the dark sky. The stars and the moon, the sun, the moon, the stars and the planets are called celestial or heavenly bodies. Our universe is a vast space that contains billions of heavenly bodies. Now, Milky Way galaxy as seen from the Earth, it gives us heat, light and energy. Plants make food using its light. The energy given by the sun is called solar energy. जो ऊर्जा हमें सूर्य के द्वारा मिलती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं. Right? The energy can be used for lighting, cooking, heating water, moving machines and cars, etc. जो हमें ऊर्जा मिलती है उनको हम वेरियस टाइप ऑफ यूजेज में प्रयोग करते हैं, लेते हैं. वी कैन जनरेट सोलर एनर्जी बाय यूजिंग सोलर पैनल्स. सोलर पैनल के द्वारा हम सोलर एनर्जी उत्पन्न करते हैं, सौर ऊर्जा. वी आल्सो यूज सोलर एनर्जी इन सोलर कुकर फॉर कुकिंग. आजकल सोलर कुकर आते हैं. इस सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर कुकर में भी कुकिंग, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. नाउ द यूनिवर्स. The universe is a huge and endless expansion of millions and millions of stars with all the heavenly bodies. A large group of cluster of stars is called a galaxy, and the sun is also a part of it. There are many galaxies in the universe. The sun, the moon, and the earth are only a small part of galaxy. The name of our galaxy is Akash Ganga or Milky Way. We live on the planet Earth. Next, the sun. The sun is the nearest star to our planet Earth. It is very much bigger than the Earth in size. बहुत बड़ा है. It rises in the east and sets in the west. It is a round, huge ball of fire made up of hot, burning gases. The sun is very important to us. As we are seeing in the figure, always remember one thing: we always place solar panel in certain angle, because by doing this we get maximum amount of heat coming on the earth from sun. Now next, the solar system. The sun, the planets, their satellites, moon, asteroids, piece of rocks and dust that move around the sun in the space altogether from the solar system. The sun is the center of our solar system. जो सूर्य होता है वो हमारे सोलर सिस्टम का एट द सेंटर में होता है. All the planets with their satellites move or revolve around the sun at different distances at speed. They move in a fixed elliptical path called the orbit. Okay, there are 8 planets in the solar system that moves around the sun. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं. नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, 4 मार्स, 5 जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस and the last one is Neptune. The word planet means wanderer. Earth is the third farthest planet from the sun
and the only planet that support life. It is because it has air, water, soil. As see the figure, you are seeing the planets and the sun in position. All the planets are a particular distances and they take complete revolution around the sun. Water, soil, and suitable temperature. It is also called the blue planet because it looks like blue. ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू जैसा दिखता है, नीले रंग का. व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस, जब आपको आसमान से स्पेस से देखा जाता है. इट इज़ बिकॉज ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सा भाग पानी के द्वारा कवर होता है. मरकरी इज द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. जुपिटर इज द लार्जेस्ट. मरकरी सबसे पास और जुपिटर सबसे लार्जेस्ट. एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट. नेपच्यून सबसे दूर. इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. वीनस इज द हॉटेस्ट. सबसे गर्म प्लैनेट वीनस होता है इन द सोलर सिस्टम. द प्लैनेट दैट हैव रिंग्स अराउंड देम आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. थैंक्स.